Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we'll discuss about the computer awareness. And the questions are on your screen. Today class is very important because I have collected many questions for you. These questions, computer awareness questions, and quiz for the banking, IBPS exams, RRB, RBI, SBI, NABARD examinations of question year of the 2025 to 2026. A year जहाँ भी exam होगा उसको पे प्रमोट करना होगा. Computer awareness and this is especially for the from the matrix digital for you. Okay, the first question for you. This question: an auto responder is a dash on mail server that automatically replies to emails. Options are A. Command, option B. Software, option C. Program, and option D. None of these. ଏବେ ତମେ ଦେଖୁଥିବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡା ଟିକେ ବହୁତ ଟେକ୍ନିକାଲି ପଚରା ଗଲାଣି and କିଛି କମନ ଜିନିଷ ବି ପଚରା ଗଲାଣି ତ ତେଣୁକରି ତମକୁ ସବୁ କିଛି ତମକୁ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ. An autoresponder is a dash on mail server that automatically replies to emails. ताले ଗୋଟେ autoresponder ଆମେ ଯୋଉଟା mail server ଭିତରେ କହୁଛେ that automatically replies to emails. ତାଲେ ସେଟା କଣ ହେଇପାରିବ? You can give your response by simply chat. ତମେ ତମ response ଦେଇପାରିବ chatting କରିକି. What is the right answer? Anyone? An autoresponder is a dash on mail that give the response of that. The none of these. You have give us PGM. An autoresponder is a dash on mail server that automatically replies to emails. Actually, all are giving the okay program. Keep program. Option C is the right answer. This one is the right answer. Program. Program is the right answer because an autoresponder is a program. What a program is that? जहाँ की मेल सर्वर को माने एक्टिव करिଥାଏ जे किछि मेल रो रिस्पांस देबा ପାଇଁ. Okay, next question for you. BDL is used to define the structure of the database, including the tables, columns, and data types
that it contains, its full form is DDL is used to define the structure of a database including tables, columns and data types that it contains. Exactly full form DDL. You give as response option A, data definition language. S, data definition language. These are the SQL commands and DDL, uh, DCL, DML. Such type of commands can be used in the SQL, but SQL database using. So DDL is the full form of data definition language. Okay. The slogan "Write once, runs anywhere." Write once, runs anywhere is related to which of the following programming language? The slogan "Write once, runs anywhere" is the slogan of which programming language? Ko programming language ro response ta hochi write once, runs anywhere. Ko programming ro response ta hochi write once, runs anywhere. You have give as response uh, Java. Are you sure? Are you sure? The right answer is Java. Yes, the right answer is Java. Java रो कोड को ही तमे जे कोनसी जगह रे लिखि कि भी जे कोनसी जगह रे कंपाइल करि परिबो. So the right answer is Java. Is Java right once, wrong anywhere. Option B or Java is the right answer. Next question for you. The term 128-bit, the term 128-bit era refers to which of the following? Sixth generation computers, laptops, supercomputers, video game consoles. The term 128-bit era refers to which of the following? The term 128-bit era refers to which of the following? Anyone? Anyone can give response? You give as option A. All are giving option A. Wrong. The term 128 beta refers to which of the following? माने एमान को भितरु कोटा को 128 बिट एरा बोली कहउछि. वीडियो गेम कंसोल्स. तो वीडियो गेम गुडा को हमें जेहेतु वर्तमान खेलुछे तो वीडियो गेम कंसोल्स गुडा को पाई 128 बिट रो दरकार पडुछि डिवाइस गुडा. ओके. Next question for you. Which of the following statements about net metering is or are correct? एमानको भितरु कोटा को स्टेटमेंट टा नेट मीटरिंग पाई ठीक अछि. कोटे भी पारे अधिक भी पारे. ऑप्शन ए, it is a billing mechanism for solar energy consumers. It allows consumers to receive credit for electricity they are to grid. Option 3, it is primarily used for monitoring water usage in urban households. Ebe option guda actually अछि. Select the correct option from the codes given below. Option A, only 1 and 2. Option B, only 2. Option C, only 1. Option D, only 3. Very interesting question.
Which of the following statements about net metering is or are correct? मते मु जस्ट टिके तुमको एटी डाउट क्लियर करे दोछि नेट मीटरिंग को तो जानियो दरकार ना नेट मीटरिंग एटा गोटे बिलिंग मेकानिज्म का बिलिंग मेकानिज्म रे कोन हुए ना जो क्रेडिट सोलर एनर्जी तुम यूज करछो क्रेडिट आकार सेटा तुम पाई परिबो ओनर सिटी जो ओनर माने यूज करंती ताकर क्रेडिट बिल आकार आडी परिबो तुम क्रेडिट कार्ड से यूज करछो तो जिन सब ले आछो पर पुनी घर जे पैसा उडा तो एटा होची बेसिकली सोलर एनर्जी क्षेत्र रे तो एटा यूज करा जाय तथापि आबि तो को स्टेटमेंट टा ट्रू हो मो तुमको गोटे आईडिया दे देली जे एटा एथ पाई यूज हुए जदि आउ टिके डिटेल तुम जानि दियो भी भलो कथा पर्टिकुलरली कोडा you give response as option A is tick. Option A is the right answer. Only 1 and 2. काहे कि only 1 and 2 हबो. It is a billing mechanism. प्रथम प्रथम कहछि जे एटा ଗୋଟେ billing mechanism. ठीक अछि solar energy पर. It allows consumers to receive credit electricity. माने इलेक्ट्रिसिटी का पेंडिंग आकार भी तमे नहीं करछ. ताले फर्स्ट भी ठीक, सेकंड भी ठीक. किंतु वाटर यूसेज कथा जो अछि थर्ड स्टेटमेंट ता सेटा जमा भी नु. तमे 1 लिखले भी भूल हो, 2 लिखले भी भूल हो. ठीक तो जमा भी नु सो फर्स्ट आउट ठीक दिस इज अ वेरी कॉमन नॉलेज जानिबा भी दरकार ओके व्हिच इज अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ वायरसेस टू द हार्ड डिस्क ऑफ योर कंप्यूटर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिस वन which is among the following is the most common source of viruses to hard disk of your computer. Option गुडा कोछि तमरो A incoming email, option B outgoing mail, option C CD-ROMs, option D websites. You give response as website. मते लागुची वेबसाइट तो नुआ काहेकि ना वेबसाइट तो केवल ब्राउजिंग करिथो माने वेब कंटेंट सुडा केवल देखि थाओ तो वेब पेज केम दियो हमें जे पर्यंत असेसिंग न करिया तो होबो नै तो ऑब्वियसली द बेस्ट सोर्स इज ऑप्शन ए इनकमिंग ईमेल हमें गोटे सुनिथो स्पैमिंग करा जाय मुख्यतः इनकमिंग ईमेल होची मुख्य माध्यम गोटे तुमको लागे गोटे नोइंग सोर्स रु माने तमे जानि छो गोटे बैंक ट्रांजैक्शन तमे करूछो एसबीआई पठीची कि को बैंक ट्रांजैक्शन कोची सेही किछि मेसेज पठीची कि एमटी गोटे सोर्स रो जणाशुना सोर्स रो मेसेज आस्तिबो तमे से लिंक रे क्लिक कर दबो क्लिक कले वायरस अटैक करी से वायरस का इजीली थाए एंड वायरस तमे जानि छे गोटे थोर कंप्यूटर पे इंटर कले सेला rapidly spread throughout the computer system. So option A is the right answer, incoming emails. Okay, next question for you. What do we call a storage device where the access time is efficiently independent of the location of the data? What do you call a storage device where the access time is efficiently independent of the location of the data? से स्टोरेज डिवाइस को हमें कोन कहबा जोटी एक्सेस टाइम माने कोन माने जो हम सीपीयू रो आ जो प्रोग्राम रो भीतर जो कोऑर्डिनेशन रो कि जो समय प्रोग्राम का एक्चुअली एग्जीक्यूट होय सेटा कोन एक्चुअली से जिनछटा Option A direct access storage device, option B secondary storage device, option C primary storage device and option D gateway device.
सेटा को एग्जैक्टली हमें कोन कहबा you give as option A is this one is right direct asset storage device काहे direct asset storage device को होची ना एठी एक्चुअली जो एसएलडी कहूचे हमें हार्ड डिस्क कहूचे जहां भी कहूचे सॉलिड स्टेट ड्राइव हार्ड डिस्क एठी जो हमर कोन हुए ना ए जगह रे एक्चुअली डाटा को हमें रीड भी करि परबो राइट भी करि परबो एसे जिसोडा करि परबो तो से कहले कथा हमर जो जगह कि एक्सेस टाइम इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट भाबरे काम करि पाए कारणिना एटा जेहेतु आज कंप्यूटर सहित डायरेक्टली इन्वॉल्व थाए सेठी एफिशिएंटली काम करिवे सहज who is among the following has been standardized in the IEEE 802.3 specification who is among the following has been standardized in the IEEE 802.3 specification option A Bluetooth option B Ethernet option C WiMAX option D all of the above anyone who is among of the following has been standardized in the IEEE 802.3 specification एमानक भितर कोटा हमर IEEE 802.3 specification ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁଇଟେबल you give response as WiMAX no WiMAX ତ କେବେ ବି ହବ ନାହିଁ अच्छा राइट आंसर इज ऑप्शन बी हो एथरनेटिंग हो काहे की ना एथरनेट जो टेक्नोलॉजी जोटा कि मुख्यतः IEEE 802 को फॉलो करे काहे की ना एठी जोटा हम प्रथम कथा आसला जो फिजिकल लेयर थाए एवं जोटा मीडियम एक्सेस थाए जोटा एमएससी हमें कहू बा मीडिया एक्सेस कंट्रोल को हम जानि जे प्रति नेटवर्किंग रे गोटे डिवाइस लागे जोटा कोन एनआईएस मान नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेटा नथले तो नेटवर्किंग करी हम ना ताले से कथा कहूची ए जो ओएड हमर तीन प्रकार केबल यूज करा जाय गोटे एथरनेट केबल गोटे ऑप्टिक फाइबर केबल और गोटे कोक्सियल केबल तो जो एथरनेट केबल पाइंगा एटा ही हमर व्यवहार करा जाय मुख्यतः ए टेक्नोलॉजी का व्यवहार करा जाय विशेष कर लैब कनेक्शन समय एटा भलो काम देखे सो दिस जो जिनसटा एथरनेट पाइ ही यूज करा जाय who is the founder of Wikipedia हमें समस्त खोजी को खोजे क्वेश्चन का आंसर तो से जो विकिपीडिया जो कि माने सब विषय जिनसोडा हम अवेलेबल होची ताको केटा गोटे डेवलपर थिबे who is the father of Wikipedia who is the father of Wikipedia you give response as C Richard Erikson no actually Wikipedia father housende Jimmy Wales Jimmy Wales is the father of the founder of Wikipedia. Okay. Next question for you. How many banks are promoting the national payments
Corporation of India. How many banks are promoting the National Payments Corporation of India? Option A 6, option B 8, option C 10 and option D 12. केतेटा बैंक हमर नेशनल पेमेंट सिस्टम को बा एनपीसीआई को अडॉप्ट करछन? You give as response option B. No, that one is the wrong answer. नुहे सेया एनपीसीआई को अडॉप्ट करछन पाखा पाखी हमर 10टा बैंक 10टा नेशनलाइज्ड बैंक सेटा को हमर अडॉप्ट करछन. सो so 10टा बैंक भितरे हमर कोन कोन आछि? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. फर्स्ट थिंग ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. 10 बैंक्स से बैंक गुडा कोछि तुम कोछि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी, देन होछि सीबी कनाडा बैंक, नेक्स्ट होछि हमरो बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा, तापर होछि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, देन होछि बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, आउट होछि सिटी बैंक एवं एचएसबीसी बैंक. या भी हो एई 10टा बैंक एटा को अडॉप्ट करछन. यार ऊपर में होछि तमरो कोन नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Who has conceived the first automatic digital computer? Who has conceived the first automatic digital computer? एमानो भितरु किए फास्ट ऑटोमेटिक डिजिटल कंप्यूटर को कंसीव करछन? हमर नाम कोन? ऑप्शन ए ब्लेजी पास्कल, ऑप्शन बी गॉटफ्राइड लेविच, ऑप्शन सी चार्ल्स बाबेज, ऑप्शन डी जॉर्ज बुल. Who has conceived the first automatic digital computer? You give as option A Blaise Pascal. Wrong answer. The right answer is option C, not B. Option C simply Charles Babbage. Automatic digital computer कथा उठितला. तो Charles Babbage is known as the father of computer. आ क्वेश्चन तो बहुत हिस्ट्री में केबे केबे भी गपी थी. तो फास्ट हमर थिला कोन अबाकस वा सोरबा, देन आसला हमर पास्कल लाइन, देन आफ्टर कैलकुलस, तापर जो आसला जो एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंस इंजन दीटा को चार्ल्स बाबेज को द्वारा हिची. तो जो सिद्रिक क्रिटिकल कैलकुलेशन उडा को ही था. आज द कांसेप्ट ऑफ कंप्यूटर फर्स्ट derived by Charles Babbage, and this thing show Charles Babbage is conceived the first automatic computer. Okay, next question for you. Which of the following are characteristics of nettops? Which of the following are characteristics of nettops? Anyone? एमानक भितरु कोनटा नेटवर्क रो कैरेक्टरिस्टिक्स? ऑप्शन ए इंटेल अटॉम प्रोसेसर, ऑप्शन बी लो कॉस्ट, ऑप्शन सी lean functionality, option D all of which. एमानक भितरु कोनटा नेटवर्क रो कैरेक्टरिस्टिक्स? अच्छा मोर एक समुदी कहि दोछि नेटवर्क माने कोन हम भी कंफ्यूज होई तो जेमति डेस्कटॉप कहउछ जेमति लैपटॉप कहउछ एक्जेक्टली नेटवर्क भी सेही टाइप रो गोटे स्पेशल टाइप ऑफ डेस्कटॉप जहा कि इंटेल कंपनी द्वारा डेवलपमेंट हेछि आउ सीटा पाखबी 2008 मसिया इंट्रोड्यूस हेइला एवं एते होछि बहुत कम कॉस्ट रे हम यूज करू आउ जदियो तदरे इंटेल तर ऑटो प्रोसेसर देइला
नॉर्मली काम गुडा केमती ही पारे तो मु कहबा कथा नेटवर्क रे एटा होची कोटा कैरेक्टरिस्टिक्स कोता विषय तो पढ़ चले एक्चुअली हां ठीक आइडिया लगेले ऑप्शन बी हो कि ठीक काहे ना जहां से आप कहली से सब किछि पूर्ण हो जाउची इंटेल कंपनी द्वारा भी डेवलपमेंट हेची लो कॉस्ट भी कहती एंड फंक्शनलिटी भी बहुत कम तो जहाँ भी हो ऑल ऑफ द अबव होची सब किछि तो मु कहला लगा हमें सब किछि प्रेजेंट मोमेंट से तो किछि जिंस तो एक्टिवेटेड रहइबा काहे ना nowadays the computer questions getting some technical questions and the recent use of the computers. So this all these things are important for all the examinations. Which of the following devices produces a permanent human readable text of graphics document? Next question for you. Which of the following devices produces a permanent human readable text of graphics document? एमान को को डिवाइस प्रोड्यूस करूची परमानेंट ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट माने मनुष्य से पढ़ि परिबो से गोटे टेक्स्ट प्रोड्यूस करूची Which of the following devices produces a permanent human readable text of graphics document? You give response as option C. No. The right answer, option C, printer. Printer is the right answer. Printer is the right answer because एमानको भितर प्रिंटेड आ रीडेबल टेक्स्ट माने जोटा मनीष पढि परिबो पेपर पे कोन कोडिंग हबो केमिति गीत आसीबो कोन सेटा आमे किछि जानि परिबा सेटा केवल मेकानिज्म ही बुझुछि से किते ताको जीरो कोन करूछि से जहां भी हो एनकोडिंग डिकोडिंग से गीत सुनुछि स्पीकर भी से या तो प्रिंटर होचे एई बडी बडी जिंस जोथरे कि किछि जिंस छापी गेला परे सेटा परमानेंट भी होछि and सेटा मनीष पढि पारुछि बा मनीष तो किछि ओटे बुझिबा बडी जिंस सेटा आसुछि ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द जॉब ऑफ अ मदरबोर्ड बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है हमें सब जिंस मदरबोर्ड यूज करूछि कंप्यूटर रे यूज होछि मोबाइल रे यूज होछि ये सब जिंस मदरबोर्ड रे यूज होछि एक्चुअली व्हाट इज द जॉब ऑफ द मदरबोर्ड what is the job of the motherboard option A sends power to all the components holds all the circuits and components together displays information tells the computer what to do motherboard का actually काम कौन you give response as option B. Yes, this one is the right answer. Holds all the circuits and components together. Motherboard, the main PCB board used over a computer. जो main printed circuit board हमें computer रे use करूची, सेटा को motherboard बोली कहूची. Motherboard रे सब किछि थाए. विभिन्न slot गुडा थाए, जो कि हमर RAM लगुची. तमर CMOS थाए, जो बैटरी बोली जिंस जोटा जो कहउछ. तमर माइक्रोप्रोसेसर लागि थाए. बहुत सारे जिंस लागि थाए. ताले holds the circuits and components together. सब जगह रे मुख्य मुख्य कंपोनेंट गुडा से जो main PCB board रे लगा अछि. That is known as the motherboard. Okay, next question for you. This part of the computer does all the thinking. It can carry out billions of instructions per second and gets very hot. This part of computer does all the thinking. It can carry out billions of instructions per second and gets very hot. Option A motherboard, option B hard disk, option C processor and option D RAM. एमानक भितर कंप्यूटर को पार्ट रे सब थिंकिंग काम गुडा को ही पारे and carry out billions of instructions per second.
गोटे सेकंड भितर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करे you give response as option C is this one is the right answer processor CPU बोली जो जिंस थाए से CPU रे ही बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन गोटे सेकंड भितर प्रोसेसिंग ही पाए so this part of computer can thinking and carry out billions of instructions per second गोटे सेकंड भितर बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को कैरी आउट करि पाए okay next question for you okay next question for you a device which is not connected to the CPU is known as which of the following a device which is not connected to the CPU is known as which of the following a device which is not connected to the CPU is known as which of the following? Option A landline. Option B, online device. Option C, offline device. And option D, device. A device which is not connected to the CPU is known as which of the following? एमानक भितरु कोन से डिवाइस ता जहा कि CPU सहित कनेक्शन हुए नहीं कोन सेटा anyone you give as option A that is wrong answer option C is the right answer offline device कोटे सिंपली हम गोटे मोबाइल के खर्च करिबा CPU सहित कनेक्टेड हबो नाही CPU सहित कनेक्टेड हबो नाही माने को लैंडलाइन डिवाइस एटा तो निश्चित प्रोसेसिंग पाई रहइबो ऑनलाइन डिवाइस ए भी सीधा सड़क सहित माने कनेक्टेड रहइबो डिवाइस तो निश्चित भाबे रहइबो ऑफलाइन डिवाइस माने जोटा कि आमे नॉर्मल रखि परिबा माने कोई पडे रखि परिबी एक्स्ट्रा रुपे सेटा ऑनलाइन सहित कनेक्टेड हो नथिबो ताले सेउडा को मोर ऑफलाइन डिवाइस बोली को कहि परिबी when a computer device is not turned not on or connected to other device सेतबे सेटा अन्य कोनसी डिवाइस से कनेक्टेड हो नथिबो तो सेही बोली जिंसो को हमें ऑफलाइन डिवाइस बोली कहू ओके which one is the common device used for drawing painting and interactively selecting coordinate positions on an object which one is the common device used for drawing, painting, interactively selecting coordinate positions on the object? Option A, image scanner. Option B, digitizers. Option C, data glove. Option D, touch panels. माने एक बार कोटा व्यवहार करा जाए हम किसी ड्राइंग करिवा पेंटिंग करिवा इंटरैक्टिंग करिवा ए सब जिंसोडा पाए exactly you give response as option A no actually सेटा डिजिटाइजर ऑप्शन बी टा होचे राइट आंसर डिजिटाइजर काहे कि ना एटा द्वारा हमें ड्राइंग भी कर देखो तुम स्कैनर जदी कहउछ स्कैनर रे केवल गोटे इलेक्ट्रॉनिक कॉपी दे देबो माने मोर फोटो एमि पके दोछ से फोटो रो अभिकरण इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बा पिक्चर फाइल कंप्यूटर जनरेट हो किंतु से कहना था ना ड्राइंग करियो पेंटिंग करियो एंड इंटरैक्शन भी करियो तो सेटा जे डिजिटाइजर द्वारा ही से जिंसो करियो तो बेले में देखि दिबो से वन टाइप जो हमरो सब उतरे कंप्लीट जो रियलिटी शो मान के पचास सांग मान
कि तमरो कोन चॉइस टा ताकू कोन डिजिटाइजर से गोटे ताको लिखि दियंती से जान केमती तो सेटा गोटे लेखा से समय इंटरेक्शन भी कहि दिबो डिजिटाइजर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइन द मीनिंग ऑफ RAM मतलब बिटु RAM पाई कोन होची प्रयोज्य ऑप्शन ए इट इज a memory which only be read option B it is the memory which both read and write option C it is the memory which is used for permanent storage it is a memory which can only be written आमे समस्त राम विषय रे पढिछे राम विषय रे जानिछे बट ए क्वेश्चन रो माने कोन which of the following define the meaning of RAM you give response as option A no ए जदि हितांता काहे ए हितांता रोम रे थिबा इंस्ट्रक्शन को केवल रीड करिवे सो दैट इज रीड ओनली मेमोरी बा रोम बोली कहउछ रोम रे थिबा इंस्ट्रक्शन सीपीयू को इंस्ट्रक्शन पास करे जे कंप्यूटर को केबिति स्टार्टिंग ऑफ होबा पड़िबो बा बूटिंग ऑफ होबा पड़िबो किंतु राम रो काम होला सेतने हम बोथ रीड भी करि पारो राइट भी करि पारो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैंडमली से रीड भी करे राइट भी करे सब करि पाए सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर it is a memory which both read and written these are the particular okay next question for you which of the following are the another names of a pen drive आगे simply समस्त pen drive को व्यवहार करूची से pen drive को अन्य को नारे कहती option A USB flash drive option B gig stick option C thumb drive option B all of the above very awareness questions very interesting questions anything exam में question भी many times comes which of the following are the another names for a pen drive anyone pen drive को आपके otherwise कौन बोली कहती you give as a reference option C thumb drive हां गोटे भलो बुद्धि चेक करिछ ठीक अछि ऑप्शन ए यूएसबी फ्लैश ड्राइव हां सेटा भी ठीक करता ये निश्चित भाबे गोटे फ्लैश ड्राइव एटा बहुत सारे जिंस आहुरी बहुत नाम भी अछि पेन ड्राइव को बहुत नाम कहती तो मैं भाबुची ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव काहे काहे कि मैं कहि दूची यूएसबी फ्लैश ड्राइव काहे कहउची ऑब्वियसली यूनाइटेड यूनिवर्सल सीरियल बस तो यूएसबी माने प्लग एंड प्ले हमें गोटे डिवाइस को लगाउची आ प्ले करूची जे कीबोर्ड भी लागुची बाहर करिया भी सुविधा ही होची माउस तो लगाउची लगै दोची बाहर कर दोची आउ गोटे का एक्सटर्नल सीडीआई कनेक्शन कर दोची यूएसबी ड्राइव माने को से प्लग एंड प्ले सो यूएसबी फ्लैश ड्राइव वाला ठीक है पेन ड्राइव को सेटा भी कहथियो जी स्टिक भी कहन पे जी स्टिक माने जेंति कि गोटे छोट स्टिक बढिया जिंसटा थंब ड्राइव माने बुढ़ा बुढ़ी कोन बुढ़ा बुढ़ी विषय को लगे के हमें टाणु से बाहर करछे से बुढ़ा बुढ़ी सदृश माने बुढ़ा बुढ़ी बढ़िया नहीं देखा जाउछि बीसी तो थंब ड्राइव भी ठीक अछि ऑल ऑफ द अबव आउ ता छडा भी बहुत नाम को कहंती ताको डिस्क की बोली कहंती जॉब ड्राइव बोली भी कहंती अभी भी बहुत सारा नाम भी पेन ड्राइव को जानते ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which of the following clearly defines the LGA which of the following clearly defines the LGA option A LGA socket is the connection point for the CPU option B it stands for the LAN grid array option C it provides connection to the motherboard and option D all of the above which of the following clearly defines
The LGA. LGA को कोटा अधिक माने डिफाइन करूची भलसे LGA रो फुल फॉर्म को जानि छ ना LGA रो फुल फॉर्म होची तमरो which of the following is clearly defines the LGA. LGA पाई कोटा होची ठीक कंप्यूटर क्षेत्र में पहुंचे छी LGA तो बहुत सारा मीनिंग रहिबो पर कंप्यूटर क्षेत्र में डिस्कशन करछि LGA रो कोटा सब किछि हो कहीं के ना इति पाई हो लैंड ग्रिड एरे लैंड ग्रिड एरे माने कोन एटा गोटे कनेक्शन पॉइंट हे परिबो सीपीयू पे इट स्टैंड्स फॉर द लैंड ग्रिड एरे ता फुल फॉर्म ता रहले इट प्रोवाइड्स कनेक्शन टू मदरबोर्ड काई ना विदाउट मदरबोर्ड कनेक्शन भी हे परिबो कनेक्शन से तो मदरबोर्ड से भी रहिबो सब किछि हो ऑल ऑफ द अबव LGA सब ठीक ऑप्शन बी टा होचे राइट आंसर Okay, next question for you. Which of the following are the other terms used for the software decay? Decay মানে সমস্ত জানছি ক্ষয়। তো এମାନଙ୍କ ভিতর কোনটা সফটওয়্যার ডিকে পাই বি ইউজ করা যায়? Which of the following are the other terms used for software decay? Option A code rot, option B bit rot, option C software erosion, and option D all of the above. You give response as option B all of the above. Yes, all of the above. सब किछि हो code rot माने कोन एटा होछ ओटे तम सिंपली जो सॉफ्टवेयर सहित जोटा फिजिकल ऑब्जेक्ट कोछ तो जो जिंसटा तमे कोछ जो सॉफ्टवेयर जे तयारी छि से जिंसटा तापर नेक्स्ट तमे जो कोछ बिट रॉट माने सेटा आइदर फिजिकल डिग्रेडेशन होई पारे स्टोरेज मीडिया बा ग्रेजुअली सॉफ्टवेयर रो माने कोन कोडिंग रो मानर हास करि पारे सॉफ्टवेयर इरोजन माने जोटा कोनती स्लो आउ माने सॉफ्टवेयर स्लो हो जाउची बा सॉफ्टवेयर दा जो तमरो ता कोड उडा को होनी कोड उडा को अपन इनविजिबल हो जाउची लुचि जाउची सेही बडी जिंस सब किछि हो ऑल ऑफ द अबव सॉफ्टवेयर डिके माने के माने ये सब किछि हो ओके which of the following is the another term used for the software hosting software hosting पाई की एमान को भितर को टर्म ना यूज करा जाय what is the following is the another term used for the software hosting
सॉफ्टवेयर होस्टिंग ପାଇଁ କି ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୋଉଟା ହେଉଛି ଠିକ आंसर ହବ cloud computing on demand service software as a service that you like कोजा SaaS बोली all of the above you give response as option C SaaS kind cloud computing भी ହେଇପାରିବ on demand service भी ହେଇପାରିବ କାହିଁକି ନା another term software hosting ମାନେ से अनेक गुडा जिनस सहित कंबाइन मिसी करी होछि सब किछि ହେଇପାରିବ all of the above next question for you which of the following is the scripting and the programming language developed by John H. Thompson for use in Adobe Director Adobe Director ପାଇଁ कोटा हमर यूज कराउतला जोटा कि जॉन एच थॉमसन को द्वारा डेवलपमेंट ହେଇଛି which of the following is the scripting and programming language developed by John H. Thompson for use in Adobe Director option A Java option B Lingo option C VBA and option D Ruby अच्छा वो एट तुमको जस्ट टिके कहि दउची एटा गोटे डीटी भलिया टूलटा डीटीपी माने जेंति तमरो पेज मेकर यूज करा जाय जेंति फोटोशॉप यूज करा जाय जेंति तमर कोरल ड्रॉ यूज करा जाय कोरल ड्रॉ फोटोशॉप पेज मेकर एवडा जेंति गोटे डीटीपी टूल कहंती बा डेस्कटॉप पब्लिशिंग टूल कहंती या कि कोटे सेटा भी सेटा टाइप जिंस तो हिंट्स तो ऑलरेडी देई छेलानी तो कोई परिको Actually, that thing is lingo. This one. Option B is the right answer. Lingo. Okay, next question for you. Which of the following language was first conceived by Alan Klobuchar? Which of the following language was first conceived by Alan Klobuchar? Anyone? Prolog, Fortran, Java, COBOL. Java तो केबे नु मु हिंट्स कहि दउची Java भी केबे नु अरे Java ଗୋଟେ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहा कि हमरो जेम्स गोस्लिंग का द्वारा डेवलपमेंट ହେଇଛି ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोबल तो नुहे कोबल भी हमरो होची एइथाइ नुहे जे कोबल और फोर्ट्रान ये दीटा जाक होची बहुत पुराना लैंग्वेज आ ये जो होचंदी ये मन पुराना लोक भी नु अले मत हिंट्स गुडा ऑलरेडी कहि सल्लडी प्रोलॉग प्रोलॉग ता होची एक्चुअली हमको द्वारा डेवलपमेंट ହେଇଥିଲା ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which of the following language is widely known for the use of the turtle graphics turtle graphics ପାଇଁ କାହାକୁ ଆମେ यूज करू which of the following language is widely known for the use of turtle graphics
टोटल ग्राफिक्स ପାଇଁ କୋଉଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ लोगो उडा डेवलपमेंट करिया छाड़ एबे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज द फादर ऑफ MySQL जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को जो डेटाबेस ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାର फादर who among the following the father of SQL SQL ର फादर किए anyone SQL ର फादर होउछने हमर किए ना MySQL ର एग्जैक्टली MySQL ର फादर हमर डेवलपर तो बहुत सारा छै फादर कहै छै माइकल वाइडनस ये उसका एक्चुअली तार डेवलपर this one is the right answer option B is the right answer okay which of the following are the objects of Microsoft Access it is simple बहुत simple question था which of the following are the objects of Microsoft Access ଆମେ जो MS Access ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ से MS Access रो आदि कोटा होचे ऑब्जेक्ट बा Microsoft Access रे कोन जिंस आसे टेबल्स क्वेरी रिपोर्ट ऑल ऑफ द above which of the following are the objects of in Microsoft Access Microsoft Access रो ऑब्जेक्ट कोटा Microsoft Access सब किछि आसे टेबल भी करंती रिपोर्ट भी करंती फॉर्म भी करंती क्वेरी भी करंती तो टेबल क्वेरी रिपोर्ट सब आसे ऑल ऑफ द above which of the following is the most commonly used operation in a relational algebra for projecting a collection of records from a relation which of the following is the most commonly used operation in a relational algebra for projecting a collection of records from a relation most commonly used operation in relational algebra for projecting a collection records. Anyone? You give as response option the all of the above. Okay, next question for you. What is the name given to the situation where the lock waits only for a specified amount of time for another lock to be released? What is the name of given to the situation where the lock waits only for a specified amount of time for another lock to be released? The नाम actually कौन सी सिचुएशन रो नाम है कौन जोटी की गोटे स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ टाइम जाए सेटा को हमर रिलीज करिया है What is the name given to the situation where the lock waits only for a specified amount of time for another lock to be released?
Anyone? What is the name given to the situation where the lock waits only for a specified amount of time for another lock to be released? Actually, सेटा कौन lock timeout. Okay, lock timeout. Timeout का mean lock timeout. Which of the following networking devices forwards data packets between computer networks? इमान हम जो नेटवर्क भीतर से व्यवहार करू हब रूटर स्विच गेटवे बहुत सारा जिनस यूज करा जाए से जो नेटवर्क डिवाइस भीतर इमान जो कोटा डाटा पैकेट पाई यूज करा जाए नेटवर्क भीतर डाटा पैकेट गुडा को फॉरवर्डिंग करिवा which of the following networking devices forwards data packets between computer networks? You give the response as option A. Is this one is the right answer? Router. Routing करे बोले ता नाम से router. बाटा देखे तो मैंने एक कुछ बहुत सही टाइप को ट्रांसफर routing रू router. Okay. Maybe our interesting question. Which country founded the ARPANET project? ARPANET. नाम पहले जानी दबो. जो कौन थे इंटरनेट रो मूल भित्तिभूमि बा इंटरनेट जो प्रथम जो आरंभ होला खाली तुम जस्ट कहि दोची जो से कार्ल रोडनेट लिखलाइट और टीम बर्नर्स जो तांकर मिल्टन ग्रेस ऑफ तो जो मिसी कोड आइडिया करले जे केमि चारिटा कंप्यूटर को जोड़ा हबो तापर नेटवर्किंग करा जे जा भी हो से जो ARPANET नामक जो संस्था से को कंट्री रो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ଆମେ ଆଜି ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଏତେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତାହେଲେ କୋଉଟା ମାନେ ମୂଳ which country founded the ARPANET project? You give response as option B is USA American বা আমেরিকা जोटा পৌঁছে আমেরিকা রে এটা আসলা ফার্স্ট পেজে চারটা কম্পিউটার কানেকশন হইতলা এন্ড এটা অ্যাপিলি তারপরে স্প্রেড হইছে ওকে which of the following which of the base form of the basic of the iOS type of internet connection internet on service তো এমানে ভিতর কোনটা হচ্ছে সুইটেবল which of the form is the basis of the iOS type of internet connection? Internet connection time. You give as option B fiber optics. कितने बार तार लगे बजे हम इंटरनेट पर अच्छा माने सारा पृथ्वी सारा व्यापी के अछि सैटेलाइट is the right answer satellite satellite बा कृत्रिम उपग्रह द्वारा इसु संभव हे परिबो जहा कि हमें इंटरनेट सर्विस पाई देगा ओके so time is very short and there are many questions also remaining there और रही गला बहुत सारे जिंस ओके नेक्स्ट क्लास से हमें से जिन छोड़ा को कवर करिबा थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस क्लास